अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बनाने जा रहे हैं एक साइड डिश चेरुपायर तोरन, दैट इज़ ग्रीन ग्राम का स्टर फ्राई। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने हाफ कप ग्रीन ग्राम लिया हुआ है, मूंग लिया हुआ है, सारा मूंग। उसको पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दिया। नाउ आई एम गोइंग टू बॉईल दिस विथ अ हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट इन अ मड पॉट। यू कैन बॉईल दिस इन द कुकर एज वेल। एक विसल दे दीजिए बस। बॉईल करते वक्त ये ध्यान दीजिए कि इट शुड नॉट बिकम मशी, जस्ट कुक्ड। पानी सारा सूख गया है एंड द मूंग इज ऑल्सो रेडी, सो लेट्स जस्ट टेम्पर इट नाउ। Coarsely grind a handful of shallots and 5 to 6 dry red chillies. Heat a tadka pan. Add a tablespoon or 2 of coconut oil. When the oil becomes hot, add half a teaspoon of mustard seeds. When the mustard seeds splutter, add the curry leaves and then add the coarsely ground onion and red chili mix. We have already added half a teaspoon of salt while boiling the moong, so now we'll add another half a teaspoon to the ground masala. Saute for a minute or so and then add it to the boiled moong. Mix well, leave on dum for 2 minutes and switch off the flame. Cherupayar Thoran Moong Stir-Fry is now ready to serve. Do serve it as a side dish with any gravy of your choice, especially South Indian. Ingredients as always mentioned in the description box. Like, share and subscribe. Thank you for watching.